Hello and welcome to the open format. It's the end of the year. Once again, I would like to thank you for subscribing to the open format, the one-stop destination for everything and anything that you're looking on the history of subcontinent, Indian subcontinent. Today, as I complete this episode, I have little more than 200 subscribers. So I want to thank all those 200 plus and many more who would join me in future. It's your voice, your platform for storytelling, your platform to ask questions from me and voice your opinions as to what is that you want to hear and what better you would like to see. So, once again, इस चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकूं. And thank you to all those who have subscribed to this channel. Well, to start with, in this episode, I'll talk about something very different, special. 28 दिसंबर किस लिए जानी जाती है? 28 दिसंबर आज के दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई थी. द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनियन बनी और उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि इट बिकेम इंस्टीट्यूशन विच अल्टीमेटली लेड टू द आउस्टर ऑफ द ब्रिटिश एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. कैसे भारत को, हिंदुस्तान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई मात्र 72 लोगों के शुरुआती दौर से जो 1885 में शुरू हुआ. I'll tell you everything in this episode. Going forward, let me tell you, this is not political podcast. It's historical one. So, I'll be touching upon that period which could be termed as a nascent part of the Congress's foundation from 1885 till 1917. The arrival of Mahatma Gandhi, or to say when Mahatma Gandhi started to impact Congress, and then Congress became a massive mass movement which led to the independence of a country, ouster of the British, and of course the foundation of modern India. शुरू करते हैं कि कांग्रेस की शुरुआत कैसे होती है. Well, 1885 से हमें पीछे जाना होगा. 1876 और 1880 के बीच में India के Governor General, which means the representative of the crown, after the awakening, the first battle of independence, 1857 mutiny was crushed by the British. East India Company's rule got ended and that was replaced by the crown. उसमें जो है, जो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव, जो इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, they were Governor General, which ultimately became viceroys. गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड लिटन. उनके ज़माने में 1876 से 1880 के बीच में वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट नाम का कानून आया, जिसके तहत अंग्रेज़ी हुकूमत को उनके जो सिपाही थे, उनके जो ऑफिसर्स थे, दे हैड द राइट टू कॉन्फिस्केट द प्रिंटिंग प्रेस, इंडियन प्रिंटिंग प्रेस को वो जब्त कर सकते थे, जिसे वो टर्म करते थे, जिसे वो कहते थे कि ये जो है हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसके खिलाफ है. I mean, they simply had the language of legislation that any press, any Indian press, any vernacular press that was causing or spreading disaffection, quote unquote disaffection, would be seized, confiscated. Disaffection का मतलब क्या था? उस ज़माने में सीधी सी बात है कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं तो आप disaffection फैला रहे हैं and you will be liable for punishment. Now that led to a lot of hurt feelings. Absolutely, at the same time, a lot of anger amongst the masses, especially the ones which were the educated ones. We know for the fact that there were several quarters in India which were going towards a Western education, so they knew about the presses. Our Indian press, जो vernacular press थी, बहुत पुरानी थी. We know that at the beginning of the 19th century, we started to have the pamphlets and we had the leaflets about the news, about the developments. So ये एक जो प्रेस का जो एक चलन था वो काफ़ी
कह सकते हैं कि तकरीबन जो है 60-70 साल इसको हो चुके थे, बहुत लोकल लेवल से स्टार्ट हुआ एंड नाउ इट हैज़ begun to assume proportions that has had alarmed even the British, which is why this act was, this law was brought in by the British. So as I said कि इस कानून के बाद जो है बहुत ज़्यादा there was sort of an uprising and disenchantment amongst the masses, educated masses in India. 1880 में लॉर्ड लिटन को रिप्लेस करते हैं लॉर्ड रिपन. Now, लॉर्ड रिपन जो है एक तरीके से जो अंग्रेज़ी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी वहाँ से भी कुछ उन पे असर आया. सो एक दो धारी उनका जो टू प्रॉन्ग्ड जो स्ट्रैटेजी थी शुरुआती जो ब्रिटिश रूल में, तो उसके तहत जो है लॉर्ड रिपन यहाँ आते हैं एंड देन व्हाट ही डज इज ही रिपील्स दैट वर्नेकुलर प्रेस एक्ट. बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुशी हुई एंड स्पेशली द एजुकेटेड मासेस एंड इवन दोज वंस who were into running presses and even locals, they were very happy. एक आज़ादी की सांस मिली. एटलीस्ट ये था कि ठीक है भाई, नाउ एटलीस्ट यू नो वी कैन से, वी कैन एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स एंड नोबडी विल कॉन्फिस्केट अ मशीन और विल गिव अस अ ट्रबल. सो ये एक फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी. 1882 में 1882, merely 2 years after he has taken the mantle of being the Governor General of India, Lord Ripon repeals the Vernacular Press Act. When at one hand it infused the native Indians and the educated masses, even the local Indians. On the other hand, the British officers and the British natives were quite unhappy with this move. Another thing that was happening that finally led to, one could say, the formation of Indian National Congress in steps indirectly was Courtney P. Ilbert. He was member of Viceroy's Council. Now, Viceroy's Council was an autonomous body that was entrusted with the responsibility of running the administration across British India. जिन एरिया पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी आफ्टर 1857, वहाँ पे वाइसरॉयज काउंसिल उनके मेंबर्स हुआ करते थे. दे वर ऑटोनमस बॉडीज. अभी लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं थी ये. दे वर द वंस हु हैड दिस ड्यूटी टू रन द गवर्नमेंट इन इंडिया. द अदर वन वाज द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. नाउ उसके एक मेंबर कॉटनी पी इल्बर्ट, उन्होंने एक सुझाव रखा और साथ में एक प्रस्ताव भी दिया, कानूनी प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम एक ऐसा कानून लाते हैं जिसके तहत जो नेटिव मैजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस हैं, दे शुड ऑल्सो बी एम्पावर्ड टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स इन अ पनिशमेंट अट्रैक्टिंग डेथ पेनल्टी एंड ऑल्सो लाइफ इम्प्रिजनमेंट. सीधी सी बात है, देयर वाज नो लॉ till that point in which Indian natives who were also into judiciary would have tried the Europeans. अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी कोई अपराध हुआ करता था उसको भारतीय मूल निवासी के जजेस उस केस को सुन नहीं सकते थे अगर वो केस जो है उसमें डेथ पेनल्टी या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई उसमें अगर प्रावधान है. That was very dual sort of legal system that was adopted by the British. So उसके खिलाफ C.P. Ilbert brings in a bill जिसके खिलाफ काफ़ी अंग्रेज़ों में जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी आपत्ति की गई और they were up in arms against C.P. Ilbert as well as Lord Ripon, because C.P. Ilbert was considered to be somebody who was close to Lord Ripon. So finally that bill was watered down और उसमें जो है कुछ खास बचा नहीं. That was a turning point. स्कॉटलैंड के मूल निवासी Allan Octavian Hume, who was also Indian civil servant, ICS officer थे, he said, now this watering down of this act, यानी कि इस कानून को बिल्कुल आपने ख़त्म सा कर दिया है, that will anger the masses. हमें पता है कि 1857 की म्यूटिनी की यादें अभी भी ताज़ा हैं
people are not really happy with you, they haven't really accepted you, you have to include them in certain decision making process. You have to win their confidence if you want to rule here. So you really have to rework the law, but that didn't happen. So he resigns. Allan Octavian Hume resigns from ICS. 1885, December, he gives a call within his Indian educated circle, along with certain British officers who were sympathetic to Indian cause, जिनको ये लगता था कि यहाँ पे जो है पूरे तरीके से जो है अंग्रेज़ी राज नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इंडिया के मूल निवासी हैं उनको भी यहाँ पे हक मिलने चाहिए. They started this drive of having a congregation of mass. एक बैठक होनी चाहिए जहाँ पे कुछ डिस्कशन हो, कुछ एक सुझाव आए, हम उनकी बात सुने, वो हमारी बात सुने, और जिसके बाद जो है कुछ प्रस्ताव हम सरकार के सामने रखें. उस बैठक को नाम दिया गया इंडियन नेशनल यूनियन, जो 25 दिसंबर और 31 दिसंबर पूना में होनी थी. But because of outbreak, that was shifted to Bombay. So on 28 December 1885, 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल में एक सभा होती है इंडियन नेशनल यूनियन की, जिसका नाम दिया गया था शुरुआत में इंडियन नेशनल यूनियन. उसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से उस सभा का गठन किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उमेश चंद्र बैनर्जी, और वहीं से शुरुआत हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की. दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद जस्ट 72 डेलीगेट्स, 72 मेंबर्स, 72 मेंबर ने उस सभा का आयोजन किया, उसमें शिरकत की, और उसके बाद जो है कई प्रस्ताव उसमें पारित हुए. तकरीबन 9 प्रस्ताव उस पहली कांग्रेस की बैठक में पारित हुए. द फर्स्ट कांग्रेस डेलीगेशन मीटिंग that was held on 28th of December 1885 saw massive discussion. Discussion with several ideas and thoughts, and 9 resolutions were passed out. Those included, first, पहली एक रॉयल कमीशन आनी चाहिए that would undersee कि हिंदुस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, whether that requires some changes or improvements or not. Secondly, जो काउंसिल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की, द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया शुड बी completely abolished, it should be recommissioned, and it can be reassembled with more members from native Indian communities, ताकि जो यहाँ के भारतीय मूल के निवासी हैं, and especially people for whom that council is taking decision, they should have this confidence कि सब हमारे लिए जो फैसले हो रहे हैं उसमें हमारे लोग हैं नहीं. थर्डली, कुछ प्रांतों में, प्रोविंसेस में, सूबों में जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे, जैसे कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अवध और यूनाइटेड प्रोविंस, वहाँ पे चुनाव होने चाहिए, उन असेंबलीज़ में चुनाव होने चाहिए. देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बजटरी एलोकेशन है मिलिट्री का, दैट शुड बी सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड, इट शुड कट ऑफ, एंड मोर budgetary allocation should be given to sectors like health, education, opening of more schools, local policing, local administration, sanitation, water resources. इन तरह की चीज़ों पे ज़्यादा पैसा जो है अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ हुकूमत दे, बजाय कि सारा का सारा बजट जो है मिलिट्री, और आधा जो मेजॉरिटी ऑफ बजट जो है उनका जाया करता था डिफेंस एक्सपेंडिचर में, दैट शुड बी कम्प्लीटली, दैट शुड बी वाटर्ड डाउन, उसको कम होना चाहिए. मोर इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि बिसाइड्स कि इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने चाहिए इंडिया में भी अलॉन्ग साइड इन इंग्लैंड, और it should have more representation to Indian natives, and more importantly the upper age limit should be increased so that local Indians should get more chances, more opportunities. And lastly, very important point, जितनी भी चीज़ों पे discussion हुई है, that impacts local population here, that impacts the common citizen of India. उन सभी मुद्दों पे पब्लिक डिस्कशन भी अलाउ की जानी चाहिए. अगर पब्लिक उसको चाहे डिस्कस करना, even through the medium of press, that should be allowed. It should not attract any penalty or any punitive measures. उस पर किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. There should be a freedom or free flow of thoughts. और ये जो है, जो असेंबलीज हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए. सो ये थे जो फर्स्ट फाउंडेशन सेशन जो था कांग्रेस का, उसके ये रेजोल्यूशन थे. उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेशन होते गए उसमें
there was improvisation of this fantastic strategy by the Indian National Congress, in which they started to have more members. They started to have more native members alongside the European ones, and more intellectuals, more educated masses started to join the Indian National Congress. और उसमें जो है हर सेशन में उनकी कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हुआ करती थी. जैसे कि एक सेशन में कानून पास, जो रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो लोकल कोर्ट्स हैं दे शुड बी एम्पावर्ड मोर. बहुत जो हैं, जो विलेज लेवल पे हैं वहाँ पे कोर्ट्स खुलने चाहिए. जो विलेज गवर्नेंस है उसके लिए भी आपको उनको रेगुलेट करने के लिए, और उनको जो है वहाँ पे जो आपके बहुत छोटे लेवल पे जो चीज़ें होती हैं गवर्नेंस में, उसके लिए भी आपका एक जुडिशियल सेटअप होना चाहिए. साथ में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स का जो है अलग अलग ब्रांचेस होने चाहिए. ये भी एक जो सबसीक्वेंट कांग्रेस सेशन था उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ. और हम देखते हैं कि एज वी स्टार्टेड टू गो टूवर्ड्स 1900s, तो उसमें जो लोकल और स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स थे, दोज वर एग्जिबिटेड in the Congress session. So that was, one could say it was really a creative thing in which they were advocating, they were marketing the talent and expertise of the native Indian industry. At the same time, talking about the plight, at the same time advocating कि इनका भी ध्यान जो है government policies में होना चाहिए, not just only in the big industries. Because of course, like as we have seen with humankind, industries have also developed parallelly, and जो है अंग्रेज़ों के starting का सारा ध्यान जो था, it was totally on the big industries like steel, like coal, like ships, like electricity. तो ये सब चीज़ें जो हैं उनका इस पे ध्यान था, बजाय कि जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्री है उस पर भी होना चाहिए. So that Congress started to advocate. In between, we also saw the internal dynamics of the Congress. Now, I will not talk much about that because that is, delving into the other genre of history. This particular episode is only dedicated on 28th of December 1885. Why it is special and why, we should remember the importance of the foundation of Indian National Congress. हालांकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दो फैक्शंस रहे हैं. एवरी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और फॉर दैट मैटर हु हैव read the history of modern India, थोड़ा बहुत जो है they would know even at the cursory level कि कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था 1907 में सूरत में, जिसमें जो है दो हिस्से हो गए थे, मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का. दोनों के अलग अलग टेक थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही था कि जो है हमें अपना यहाँ पे रूल एस्टैब्लिश करना है. And finally, in 1917, what we see after arrival of Mahatma Gandhi will change the course of our country forever, the contours forever. Of course, result मिला उसका 30 साल बाद in 1947 when we got the independence. But as a mass movement, Congress was slowly starting with the arrival of Mahatma Gandhi in 1916 in India, and he was actively participating in sessions of Indian National Congress 1917 onwards. And it was Mahatma Gandhi who wrote the Constitution of Indian National Congress in the Amritsar session. Now these are topics for which I'll talk other day with some other details. For this episode, I would like to end here. So बस खत्म करते हैं इस एपिसोड को यहाँ पे. Thanks for watching. Please write to me. Let me know what is that you want to see. Let's keep building this community. Let's keep have exchange of ideas so that I know what is that you want to see and you get to see what you like. So please keep spreading a word. Keep following me. Please spread a word so that we have more subscription, that this is one destination for anything that you want to know about the history of Indian subcontinent. Thank you for watching this episode. See you soon. Happy New Year in advance. Goodbye.